Everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick video where I'm going to teach you how to use these three powerful indicators for scalping strategy. जो बहुत सारे जनों का कमेंट आया था लास्ट वीक में कि ऐसा वीडियो बनाते रहो, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू कंटिन्यू मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। और अगर आप निफ्टी के ट्वीट फॉलो कर रहे हो, यू माइट बी एंजॉइंग सीइंग दैट द मार्केट्स निफ्टी एक्चुअली हैज बीन बिहेविंग लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग। आज के दिन भी लेवल्स ब्रेक हुआ 25 150 140 का, 25,050 का टारगेट था, 60 के आसपास का, 50 60 का, एंड इट वेंट देयर, पॉज देयर एंड क्लोज देयर। तो वहां पर बंद हुआ। फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। एंड लूनार साइकिल के बाद से अमावस्या पे बेरिश क्लोज हुआ मंडे, एंड देन इट कंटिन्यूड, सो विच इज 2 to 3 days ऑफ बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूड पोस्ट अमावस्या is what we are seeing as per lunar cycle. Now, that's about Nifty. Now, I'm going to show you a scalping strategy which you can apply on crypto. You can apply on anything and everything. But आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी कर रहे हो, there is always risk involved. You have to maintain stop loss. It's important, and you need to understand that whatever investments that you are doing has to be done very prudently with a strict stop loss and understanding the risk. तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी क्विकली लेट मी जस्ट मूव ऑन टू explaining you the three powerful indicators that I think is going to work for you for scalping strategy especially. And यहाँ पर अगर आप मेरा चार्ट देख पा रहे तो एक कंफर्मेशन मुझे दीजिए कि you are able to see the chart and everything. Okay, awesome. So I'm going to switch my screen to just give me a second. This is Bitcoin. I'm going to switch my screen to another account जिसमें थोड़े से फंड ऐसे ही डाल के रखे, जस्ट टू टेस्ट एक्सपेरिमेंट सर्टन थिंग्स। सो वहां पर मैंने स्विच किया है, एंड दिस इज बिटकॉइन यूएसडी ऑन अ डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं ये स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग वाली आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, द ओवरऑल ट्रेंड, if you look at it, the overall trend, you can clearly see from how Bitcoin has been in a very strong upside move, and ये short term में correction आ रहा है, range में है market, and that's how it has been moving. So the first thing that I want to do when I'm looking at it, बहुत important क्या होता है दोस्तों, the high and low of the prior day is very crucial. The high and low of the prior day. So if you're looking at this entire रे लेना, हॉरिजॉन्टल रे लेना है, तो प्रायर डे का हाई ले लिया मैंने, ओके, प्रायर डे का लो, प्रायर डे का ओपन विच इज हियर, एंड क्लोज। ये चार लेवल्स मैंने मार्क कर दिए यहां पे। आई एम गोइंग टू हाइड अक्रॉस वॉल्यूम हियर, एंड ऑल्सो द इंडिकेटर दैट आई एम गोइंग टू पुट अक्रॉस is an MACD indicator यहाँ पे, and I'm going to put across my one more indicator which is Bollinger Bands. तीन चीज डाला है, थ्री पावरफुल इंडिकेटर्स है। पहले तो पिवॉट लेवल्स, बॉलिंगर बैंड्स एंड MACD, ये तीनों लेवल्स को मैंने डाल दिए यहाँ पे, और ये डेली टाइम फ्रेम पे डाला। फिलहाल हम स्कैल्पिंग देख रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। This method that I am showing you, you can apply it on hourly, you can apply it on 15 minutes, you can apply it on any time frame. From here, once you go on 1 hour time frame chart, okay, 1 hour time frame chart पे अगर आप जाओगे, यहाँ पर we can clearly see that this is the level. So there are, you will get levels basis of two different concept. Pivot level, the prior day high, low, open and close. These four levels are very important. और ये लेवल पे अगर हमारा हिस्टोग्राम जो नीचे आप देख रहे हो, MACD में हम लाइंस नहीं देख रहे, हम हिस्टोग्राम को देख रहे हैं। तो अगर आप ये हिस्टोग्राम देख रहे हो, एंड इफ लुकिंग एट दिस, बहुत ही जबरदस्त रिवर्सल मिलता है दोस्तों फ्रॉम दीज मेथड्स। इफ यू लुकिंग एट दिस, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू, below this level, below the low, prices did not close. There was an attempt on the downside. This is 1 hour time frame chart, लेकिन प्राइस ने क्लोज नहीं किया इसके लो के नीचे। कैन यू सी दैट दिस वॉज एन अटेम्प्ट, दिस वॉज एन अटेम्प्ट, दिस वॉज अनदर अटेम्प्ट, बट देर वॉज नो क्लोज बिलो दिस लेवल, एंड ऊपर गया वन। दूसरा इंडिकेशन,
The histogram, if you check, started showing green momentum higher. Clearly from this level, जैसे ही ये बैंड के ऊपर मिड पे गया, दिस वाज अ बाय. सो ये कैंडल से रिवर्स हुआ, इसके ऊपर गया, दिस वाज अ बाय. एंड टारगेट बॉलिंगर बैंड का अपर वाला लेवल या अपर साइड का जो प्रीवियस हाई था वो टारगेट यहां अचीव होता हुआ नजर आ. सो वी कैन क्लियरली सी दैट when we are scalping we want to catch reversals. So overall if you're looking at this trend right now, we are now at the upper end of the bends, we are now at the upper end of the previous high. तो मतलब ये hurdle बहुत important है. If prices manage to break and close above this hourly candle close चाहिए, we will get a continuation of trend. अगर रिवर्सल यहां से हो गया, it will be a classic opportunity to sell again for the range. I'm again repeating. Once we see a reversal from here on the downside, we'll have an amazing opportunity once the histogram starts coming down to again sell for some downside opportunity. तो ये hourly पे है. You can apply this on a 15-minute chart also. 15 will give you a much faster setup. यहाँ पर स्कैल्पर फीस 15 मिनट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सो यू विल हैव reduced fees that you can find from here. So overall, if you're looking at this specific chart, you can clearly see that the reversal happened from the downside again from this level. Can you see that on a 15-minute chart also, prices did not break from this prior low, reversed on the upside, and this was an opportunity to buy with a positive histogram. पॉजिटिव हो रहा है, रिवर्सल मिला है, एंड यहां पर बाय करना है. दिस वॉज अ स्टॉप लॉस. दिस इज वेयर द रिस्क इज. वंस यू हैव अ स्टॉप लॉस एंड देन द टारगेट कैन बी द प्रायर, या तो जो प्रायर ओपन है वो रख लो या अपर साइड ऑफ द बेंड. So that's the target. This is a shorter term move that you can capture using a 15-minute chart. So and then ये सारे moves जो है ना बहुत fast quick होते हैं. So you have to be careful. You have to trade with a strict stop loss. Always remember, whenever you are trading crypto, it has to be with a stop loss, understanding the risk. Now over here, we can clearly see that prices are back at the upper end on a 15-minute chart also. We will not be betting on a continuation here. We want a reversal. क्योंकि अगर मैं हिस्टोग्राम देखूं, हिस्टोग्राम पे अभी कहने से प्राइसेस ऊपर जा रहा है लेकिन हिस्टोग्राम में मोमेंटम नीचे का है. सो फिलहाल हिस्टोग्राम में बाइंग नहीं दिख रही है. शॉर्ट टर्म में दिस इज स्कैल्पिंग. पोजिशनली इट कैन गिव अ ब्रेकआउट. पोजिशनल ब्रेकआउट मिला तो हम देखेंगे. सो अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, यू हैव टू लुक एट आवरली चार्ट. क्लोज हो रहा है अपर बैंड के ऊपर, देन वी हैव टू लुक एट हिस्टोग्राम. थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो एंड फिर से रिवर्स होने दो, एंड वी हैव टू सी इफ इट इज सस्टेनिंग अबाउट द प्रायर हाई. ये तीनों कंडीशन देखनी है. वंस इट डज दैट, देन विच मीन्स अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, विच इज पोजिशनली ट्रेड. स्कैल्पिंग के लिए रिवर्सल्स कब पकड़ना. That's how you have to trade. And it's a very simple method. If you apply it correctly, you will be able to see how you can trade using these methods. And there are options also. So you can, and there is expiry every other day. So you can trade options. यहाँ से आप options देख सकते हो. And options में you can always put, if you're looking at these options, IVs देखना important है. The overall IV of Bitcoin has actually reduced sharply. It is usually around 60 के आसपास होता था, अभी IV कम हो चुका है, मतलब मार्केट रेंज में. IVs के डेटा से भी बहुत सारी चीजें पता चलती है. There is something known as trackers. If you want to invest into Bitcoin as an investment, then you can also look at trackers where it can be used as an investment also. So ये सारी चीजें हैं यहाँ पे. This is the platform. There are so many cryptos, and I think it's important to for everyone. And then see it's giving a breakout right now on 1 hour time frame chart. Breakout आ रहा है, but don't get carried away.
we have to wait, let it break out, let it close above the high, next candle थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दो, मोमेंटम कम होने दो, एंड फिर रिवर्सल कैच करेंगे बाई साइड के लिए, क्योंकि ये बाई साइड का लग रहा है। ब्रेकआउट पे बाय नहीं करेंगे, ब्रेकआउट बाय करेंगे तो लेट हो जाएंगे। क्रिप्टो में आई हैव ऑब्जर्व्ड इफ यू बाय ऑन द ब्रेकआउट यू आर लेट, सो यू हैव टू वेट फॉर प्राइस टू ब्रेक आउट, let it go wherever it is going, say 1,15,000, wait there, let it come down, let this cool off, will not sell, then we'll look for buy only, and once it cools off and reversal again scalp। समझ में आया? सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे लिंक है दोस्तों, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई प्रीमियम कम्युनिटी, द लिंक इज डाउन देयर, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट इफ दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू। आई वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इट इज रियली यूजफुल फॉर मी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। मैंने क्या किया, मैंने बिटकॉइन में डाल दिया है, एंड margin requirement is hardly anything, but you have to be looking for trading, then you can also trade. You can also scalp. So these are the three powerful indicators I thought you should know. And if you are liking these videos, then do put your comment down there. And if you're liking the tweets and the short videos on Nifty Bank Nifty भी पसंद आ रहा है आपको, तो मुझे बताइए, तो नीचे कमेंट पे डालते रहिए। एंड साथ में डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय community down there. If you are a part of a crypto trader, then you can join. The link is down there. चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर, एंड ensure that you are maintaining the stop loss and understanding the risk. Thank you very much. Ashish Kyal signing off.